Namaskaram everyone. How are you guys doing? This is a video for everybody who's trying to prepare for CAT 2023, 2024 or in fact any of the coming years. The basics of the CAT have never changed. In my 12 years of training CAT aspirants from various walks of life, I have come up with a few insights that are based completely on data. And using those insights, I'm going to tell you how is CAT different from the other exams. And this video is about the basics, the fundamentals, मूलभूत बातें जो आपको पता होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, आपके टीचर्स को ऑब्वियसली पता है. तो हम डिस्कस करेंगे कुछ बातें और ये है आज का एजेंडा. So today we are going to talk about the CAT pattern. We are going to talk about knowledge versus strategy. We'll understand the percentile game. I'll answer the most commonly asked question, the number of good attempts, speed versus accuracy, coaching. What about people who've never read anything apart from their syllabus books? Which mock series to buy and when? And finally, how can I study VARC from you? So I'm going to take these questions up one by one and quickly guide you through all of the details. The first question, CAT pattern. Now the CAT pattern is very simple. CAT is divided into 3 sections. All of the sections are timed, which means time management is not an issue. आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि टाइमर खुद स्टार्ट होता है, खुद बंद होता है. एक सेक्शन 40 मिनट का, 40 मिनट्स का है. 3 सेक्शंस हैं. The first section is VARC, verbal ability and reading comprehension, which is also known as English. But it's actually not an English-based section. It is a section which is based on verbal ability, which means verbal reasoning, logic, and reading comprehension, both of which are there in the English language. There are 24 questions in this section as per the latest pattern. We don't know what will happen this year, but we are expecting that the pattern will largely more or less remain the same. So we are going to expect 24 VARC questions this year as well. Then moving on to the second section is DILR. It was a nightmare this year in CAT 2022. We hope that it turns out to be better for the next year aspirants. So it's a very, I would say, problem solving based section with no theory, but just a methodology and set solving and set solving and set solving. So there were 20 questions in LRDI this year, 40 minutes again. And then the third section, 40 minutes again, is QA or quantitative aptitude or quantitative ability as some people call it, which is maths. And it's a very common, I would say, industry norm to tell people that maths में calculus नहीं आता है, 10th तक की maths आती है, but QA also is difficult as compared to a lot of MBA exams, I would say, not as compared to JEE, of course. And engineers do get or PCM people basically do get an edge here in QA because their maths is already strong from school days and they have done more of maths than the commerce people or arts people or biology people. Nevertheless, if you start preparing on time, you go to a good educator, I'm sure they'll help you clear your basics. So that's the CAT pattern for you. 120 minutes का exam है. 120 minutes लगातार बैठना कंप्यूटर स्क्रीन के सामने और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उससे 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचना और सेंटर तक का ट्रैवल, ये सारी चीज़ें फिजिकली डिमांडिंग है. इसीलिए अगर आपको लगातार बैठकर पढ़ने की आदत नहीं है तो आप आज से ही शुरू करें. स्टार्ट सिटिंग फॉर एटलीस्ट 2 hours and then take a break and then sit for 2 hours and then take a break, especially when you are edging closer to the exam. So right now maybe you're not studying as much, probably you're studying just 2 hours a day, which is absolutely fine in January. But later on, as you approach closer to the exam and you're doing 6 to 8 hours of study, then you can take it in 2-hour slots so that that sitting stamina, that butt numbing exercise of 2 घंटा बैठना, अपनी तशरीफ को बिठाए रखना और कंप्यूटर को लगातार ताड़ना आपकी भाषा में, उसकी आदत आपको डालनी चाहिए. Let's move on to the second question, which is what is crucial, knowledge or strategy? Now, knowledge, जैसा कि मैंने कहा, QA में लोग बोलते हैं कि 10th तक का मैथ्स आता है. LRDI में कोई थ्योरी ही नहीं है, कोई फॉर्मूले नहीं है, बस एक मेथड सीखना है और उसके बाद सेट सॉल्विंग में अपना दिमाग चलाना है. VARC में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप बचपन में भी अनसीन पैसेजेस कर चुके हैं.
वोकैबुलरी या ग्रामर का रिविजन कर सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा सीख सकते हैं, लेकिन घूम फिर कर आ क्या रहा है? आ रहा है एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड to a large extent depends on the kind of school you went to, your general IQ, the kind of coaching centers or tuitions or the friend circle. All of that influences your aptitude. So your aptitude is not just one year ki tayari or 2 years ki tayari. Your aptitude is largely about your school, your grad, a post grad if you have any degree. So it's definitely knowledge into play, and that knowledge can easily be gained through books as well as by the help of teachers. स्ट्रैटेजी बहुत मायने रखती है, और स्ट्रैटेजी हमको कोई नहीं सिखाता है सिवाय कैट एजुकेटर्स के, और वहां पर कैट एजुकेटर का रोल आता है. आई एम ऑल्सो इन अ सटल वे आंसरिंग द क्वेश्चन, इज कोचिंग नेसेसरी? तो जब आप कोचिंग लेते हो तो आप कोचिंग वो नॉलेज के लिए सिर्फ नहीं लेते हो, आप स्ट्रैटेजी सीखने के लिए, मॉक्स प्रैक्टिस करने के लिए, टीचर की हेल्प लेने के लिए भी कोचिंग लेते हो. तो मैं ये एनकरेज नहीं कर रही हूँ कि आपको कोचिंग लेनी है, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैट सिर्फ नॉलेज गेम नहीं है, कैट नॉलेज प्लस स्ट्रैटेजी गेम है. इट्स एन अमालगमेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर knowledgeable, you know the syllabus, but you also have to make sure that your strategy of solving the paper is in place. If your strategy is not in place, simply knowledge will not get you anywhere. Moving on to the third question, understanding the percentile game. I want you to look at your screens. This is the data of CAT 22 versus CAT 2021. So if you see the sectional, the overall cutoff, which is 80 to 85 percentile, is scored at 36 to 41 marks this year. Yes, 36 to 41 marks is literally 12 correct questions. 12 threes are 36, plus 3 minus 1 का marking है, plus 3 for the right answer, minus 1 for the wrong answer, 0 for the unattempted ones. अगर आप पूरे पेपर में 66 questions में 24 VARC, 22 DILR और 20 QA, आप ये 66 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपका सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाता है. और 99.5 परसेंटाइल लाने वाला व्यक्ति 93 का स्कोर लाता है, यानी 66 में से लगभग अमूमन 33 क्वेश्चंस करने से बात बन जाती है. इसीलिए मार्केट में ये बात इतनी फेमस है कि आधा ही पेपर करना होता है. आधा ही पेपर करना होता है ऑल्सो शुड एक्सप्लेन यू what I just told you, that not only knowledge but also strategy is super important when it comes to cracking CAT. It's not just about रट लिया और जाके वहां vomit कर दिया. It's unlike anything that you've seen at school. I want the parents to watch this bit. You can share this 1 minute with your parents. कि 66 questions में से अगर आपका बच्चा आधा पेपर कर आता है, 33 questions सही कर आता है, तो आपका बच्चा टॉप भी स्कूल जाएगा. प्लीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप लोग ना रखें अपने बच्चों से, और मैं स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ कि स्टूपिड एक्सपेक्टेशंस मत रखो अपने आप से मॉक्स देते वक्त, तैयारी करते वक्त, कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं. स्ट्रैटेजी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. मोर ऑन स्ट्रैटेजी इन दी कमिंग वीडियोज ऑफ कोर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स? अरे भैया आधा पेपर करने का है, ठीक, आधा पेपर करने का है, लेकिन 2021 का डेटा देखिए, वापस अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए. 2022 में 99.5 के लिए 93 का स्कोर चाहिए था. 2021 में 99.5 के लिए 108 का स्कोर चाहिए था. इसका मतलब सीधा 15 नंबर का फर्क है. 15 नंबर का मतलब है 5 क्वेश्चन. तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, या कोई भी टीचर इस बात का जवाब कैसे दे सकता है कि इस साल कितने क्वेश्चन करने हैं? अगर मैं 21 के डेटा के हिसाब से जाती और उतने क्वेश्चंस करती तो या तो कर नहीं पाती बिकॉज पेपर डिफिकल्ट था इसीलिए कम स्कोर पे अच्छा परसेंटाइल आया, या फिर मैं नेगेटिव मार्क्स ज्यादा लेकर आती क्योंकि मेरे दिमाग में एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे और मैं वो अचीव करने के लिए नेगेटिव्स बढ़ा लेती और मेरे मार्क्स नीचे गिर जाते. So you have to be very very careful. There is no standard answer to how many questions should I do. Anybody giving you a predetermined answer is giving you half the information. Nobody can tell you कि कितने questions करने हैं. हम सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस करने से पिछले सालों में कितने परसेंटाइल्स आए हैं. तो लगभग अप्रोक्सीमेटली हम इतने क्वेश्चंस टारगेट करेंगे. इट इज एब्सोल्युटली स्टूपिड एंड आई एम सेइंग दिस आउट लाउड ऑन यूट्यूब. It is absolutely stupid to think of a predetermined number that I'm going to crack these many questions this year, these many questions in this section, and these many questions in the second section and third section, and so on and so forth. It is stupid.
It is not based on data, it is not based on experience, it is not coming from the right mindset, from the right sources. Okay, so please compare the data of CAT score versus percentile. It's easily available on Google. आपको बड़े आराम से मिल जाएगा. बहुत सारे इंस्टीट्यूट से डेटा अपने वेबसाइट्स पे पोस्ट करते हैं. आप देखेंगे कि हर साल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल गेम चेंज होता है. पेपर टफ आएगा तो कम मार्क्स पर अच्छी परसेंटाइल आएगी. पेपर इजी आएगा तो अच्छे परसेंटाइल के लिए ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, अटेम्प्ट ज्यादा करने पड़ेंगे. इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें. सो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गुड अटेम्प्ट्स? as many as you can do without going wrong. High accuracy maintain कर high attempts. So high attempts and high accuracy brings me to the next question, speed versus accuracy game. Now knowledge का part जब cover हो जाता है, syllabus जब completion की तरफ बढ़ने लगता है, तो फिर आती है बात speed की और accuracy की, because then you start practicing. Let's say your accuracy is good, your accuracy is high, which means when you attempt a question you get it right, or you just leave it out. But then is that enough? So if I do 5 questions in the exam and all 5 are right, my accuracy is 100%. But then am I going to score 99 percentile from those 5 questions? The answer is I don't know. No. The answer is not no. The answer is I don't know because paper का level नहीं पता. इस साल 5 क्वेश्चन DILR में करने वाले बच्चों के सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हुए, तो मैं कैसे बोल दूं कि 5 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता? 5 क्वेश्चन से सब कुछ होता है, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा सेक्शन, कौन सा पेपर, कौन सा ईयर, कौन सा लेवल. वी डोंट नो. सो therefore it's extremely important that we start working on speed. I would say a good time to start working on speed is April onwards. Safe. अप्रैल से हमें अपनी स्पीड पे ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए. टाइमर बेस्ड क्वेश्चंस करने चाहिए. एक आधा मॉक वीकली हमें एक मॉक टाइप दे देना चाहिए. पुराना एक आधा पेपर देखने स्टार्ट कर देना चाहिए. एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फुल ऑन from June, July, August, September, October is your time of taking mocks and working on your strategy and all of that. Your syllabus ideally should be complete by May and June, but these days people have crash courses, so people come and join various institutes in August as well. The last CAT admissions happen in the month of August. People come and they expect miracles to happen, especially if the name like mine means a miracle. They expect us to just give them 99.5 percentile and they'll come huffing and puffing in August and एकदम रक्षाबंधन मनाकर टीका लगाकर आते हैं और कहते हैं कि बस हमारा कैट निकलवा दीजिए. I don't make any false promises, but yeah, to each his own. A good time to start is now. Let's go ahead. Is coaching necessary? Totally up to you. There are people who go to coaching. There are people who did coaching last year. This year they do it on their own. There are people who did it on their own last year. This year they are taking coaching. There are people who never take coaching. There are people who cannot survive without coaching. There are people who like online classes. There are people who like offline classes. There are people who do both. There are people who do multiple online teachers classes. Your call. देश आजाद है. आपको जो अच्छा लगता है आप करिए. आपको एक टीचर से पढ़ना है, 4 टीचर से पढ़ना है, 36 टीचर से पढ़ना है, आपकी मर्जी है. आप जितना ज्यादा लोगों के पास जाएंगे, चॉइस फटीक होगा, स्ट्रैटेजीज क्लैश करेंगी, आप परेशान होंगे. 1 टीचर पर सेक्शन इज गुड. बहुत सारे टॉपर्स ऐसे ही एक टीचर पर सेक्शन से ही एग्जाम निकालते आए हैं. आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे तो एक सेक्शन एक टीचर ही पढ़ा रहा होता है. ऑनलाइन में आपको चॉइस मिल जाती है. आप विंडो शॉपिंग कर सकते हैं, अलग अलग क्लासेस अटेंड करके देख सकते हैं. व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट, व्हाटएवर सूट्स यू. Is coaching necessary? Like I said, it's totally your call. If you think you need guidance, go for a coaching. If you think you can't, if you can't manage with the coaching, you're working, or you think you will manage on your own, or if you've taken coaching earlier and your basics are already strong, you know everything and it's just a matter of practice, then coaching is not required. You can rely on YouTube, books and mocks, of course. Which mock series is the best? This is too early to be talking about mocks, but because this is a section covering all the basics, I'm answering this question. You can take anything ranging from SimCats, which is IMS ka mock series. SimCats are really close to CAT, especially the BARC section is super tough. Or you can try CL mocks. You can also try time mocks, which are known as MCATs. All the 3 series are fine. All the 3 series are bestsellers in the market. All the 3 series are old. All the 3 institutes have been there in the industry for so long. So people also do sharing with friends. So I will buy SimCats, you will buy MCATs, and then we'll share half of each exchange half of each with each other. You can do all permutations and combinations. Like I said, देश आजाद है. Mock start करने का अच्छा वक्त is May. Okay, so May onwards you can start taking weekly mocks and then you can increase the frequency later.
Finally, a lot of people have been writing to me. That's very kind of you. I have received a lot of messages on LinkedIn, in YouTube comments, on the Instagram page, and of course on the English Shorts ID about where am I teaching. I am teaching currently at IMS Karkaduma and IMS Noida. So if you want to study VRC from me offline, these are the two places where I am the VRC educator. You are welcome. You can walk by anytime you want. If you're staying in Delhi NCR and you can travel to IIM Noida or IIM Karkaduma, you'll find me there. My staff, our team will be, you'll find me, our staff, and our team will be able to help you. We'll guide you about everything. Take a tour, meet us, okay? Come over, drop by anytime. Online, I'm doing nothing except YouTube. I'm not associated with any brand, and this is the only channel that I have. Will I teach completely online on YouTube? No, nobody does that. The proper classes एकदम शेड्यूल के साथ एक एक टॉपिक एक एक डिटेल YouTube पे नहीं होगा. उसके लिए आपको या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं जाकर पढ़ना पड़ेगा. मैं समय समय पर कुछ कुछ सेशंस लेती रहूंगी जो हेल्पफुल होंगे, जो मैं ऑफलाइन कन्वे नहीं कर पाती हूँ या जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, या फिर जिसकी डिमांड आएगी. जैसे मैंने पैरा जंबल्स यूट्यूब पर अवेलेबल कराए हैं. यू कैन गो एंड चेक देम आउट ऑन द चैनल. We have done PYQs of CAT, previous year questions. We have done decision making. So we've done a lot of important, useful sessions on the channel. So I'll try and keep the channel, updated with the latest important videos. It's a bit of a hustle for me because I'm already working at IMS, and it's a struggle to manage with time. But I hope that you find the channel useful. If you do, then please like the video, share it with your friends, subscribe to the channel, and please keep coming back to the videos. That's what keeps me going. Thank you, and take good care of yourselves.